हेलो। या सो आई एम लाइव अगेन। सॉरी, पता नहीं यार, उस टाइम कुछ हो गया था। ये पता नहीं रात को आके क्यों अटकने लग जाता है यार। सो परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग्स हम पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, पढ़ तो क्या रहे थे। ऑलराइट, सो वी गॉट दिस वन and this we gonna be all only turning true। ठीक है भाई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाँ, इसको तो यार रिन्यू ही कर दे तो भाई, रिन्यू ही करते। पम 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 पम। ठीक है, तो अब ये हमें क्या करना है? पहले पहले तो हमें फर्स्ट इटरेशन करनी है जिसमें हम S1 की लेंथ ले पाए, और उससे भी पहले हमें एक काम करना है। वी नीड टू चेक कि S1 की जो लेंथ है, S1 डॉट length length is greater than s2 dot length। length at this time हम सीधा इसमें रिटर्न कर देंगे false, है ना? सीधा सा हिसाब किताब है इसमें। क्या कि इसकी लेंथ इससे बड़ी होगी तो इसका परम्यूटेशंस इसके अंदर आएंगे ही नहीं। सही है ना? बात तो सही है। एक सेकंड में चेक कर लो यार, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? सही है ना? हाँ, आवाज़ तो आ रही है भैया मेरी। तो अब क्या होगा यहाँ पे? आ, यहाँ पे हम एक इटरेशन करेंगे, फोर इटरेशन करेंगे जिससे हम S1 के कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट ले लेंगे। ठीक है, सो एंड ऑफ I equals to 0, I is smaller than S1 dot length S1। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, सो care of ch of S1 dot to char array। This what we can do also. Okay, so s1 dot put the character and its, thank you so much. Okay, so map of s1 dot put and map of s1 dot get और default करके आता है इसमें एक मेथड default। ठीक है, गेट और डिफ़ॉल्ट में क्या आता है? हम सेम कैरेक्टर को गेट कर सकते हैं, अगर ये नहीं मिलता तो इसको यहाँ पे ज़ीरो प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पे हमने इसका काउंट ले लिया। ठीक है, ये सीधा सीधा काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा जो गेम है वो शुरू होगा यहाँ पे, जो कि होगा एक प्रॉपर विंडो बनाने का। ठीक है, सो हमने ये ड्रॉ किया था यहाँ पे, इससे थोड़ा कंटेक्स्ट मिल जाएगा हमें। ओके, सो यहाँ पे S1 S2 था। S1 का हमने फ्रीक्वेंसी काउंट ले लिया। अभी ये S1 का परम्यूटेशन हम S2 में ढूंढेंगे, तो यहाँ पे अ, हमारे दोनों पॉइंटर्स ज़ीरोथ इंडेक्स पे ही है। और इससे क्या होगा? वी विल चेक दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज
first we will be uh, creating a hash map. हाँ, ये नहीं होगा भाई, इसमें होगा while while r is smaller than s2 dot length, ठीक है। और हम क्या करेंगे, आ, हम इटरेट ही तब तक करेंगे जब तक जो लेंथ है वो वही रहे। लेट्स सी, so what we will going to do is we will do a while loop, ठीक है। while loop से क्या होगा, if r minus l plus 1 which will become the length, ठीक है, if is this is greater than s1 dot length, if this becomes greater, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम हमारे l पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब एक और होता है क्या, कि हम हमारा जो मैप ऑफ एस टू था, ठीक है, उसके काउंट को भी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे होगा s2 डॉट कैर एट l, उसके बाद s2 डॉट गेट और डिफॉल्ट, गेट और डिफॉल्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ गेट रहेगा क्योंकि यहाँ हर बार गेट आएगा, क्योंकि हम आ, इसे हर बार सेट कर रहे होंगे ना। यहाँ पे गेट आ जाएगा और गेट आ जाएगा तो यहाँ माइनस, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ये कर दिया, ठीक है। सबसे पहली बात ये, while if this is greater than the size of array, size of string 1, at that time we will be uh, decrementing this, ठीक है। अब इंक्रीमेंट कब होगा, इंक्रीमेंट होगा मैप ऑफ s2 डॉट पुट, मैप ऑफ s2 डॉट पुट this, we will say here get or default, get or default 0। और यहाँ पे ये तो L था, बट इन दिस केस यहाँ पे R रहेगा, ठीक है। इसे फिर से मैं ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि फिर से कोई ना कोई एज केस फंसेगा यहाँ पे। इसको इंक्रीमेंट कर ही देते हैं, ठीक है। सो मैप ऑफ s2 डॉट पुट कैरेक्टर एट r, मैप ऑफ s2 डॉट गेट और डिफॉल्ट कैर एट r 0 और +1,
ठीक है, ये हो गया हमारा। और फिर क्या होगा, आर प्लस प्लस हो ही रहा है यहाँ पे, ये हो ही रहा है। और यहाँ पे एक चेक आता है हमारा, जब मैप्स को हम अ, एक दूसरे के इक्वल्स में वो करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं दो मैप्स को, तो उसका होता है मैप ऑफ S1 डॉट equals to, I guess, let me check, hash map equals in Java method of hash map is used to determine if two, हाँ, तो equals to नहीं होता, वो सिर्फ equals होता है, is equals of map of f s2। अरे यार ये क्या हो गया। हम्म, और इसको हम f में कर देते हैं, then if that doesn't happen, हाँ तो यहाँ पे false कर देंगे ना, कभी ना कभी तो true होगा, return true, true। ठीक है, तो हमने पहले चेक किया इक्वल्स है नहीं है, मैप ऑफ S2 तो इक्वल्स नहीं होगा, एट दैट टाइम वी विल ऐड दिस, if this is greater than the length we have, at this time we will decrease the frequency of the characters as well within map of S2। अरे यार, map of S2 dot get, ठीक है, map of S2 dot get S2 dot caret S1 dot length, ठीक है, अगर ग्रेटर होगा तब। और जैसे ही इसका साइज इक्वल आ जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी, चेक फॉर द रिजल्ट, वी गॉट this to be false, but this to be false as well, that's nice। map of S1 is not equal to map of S2 while r is smaller than S2 dot length r plus plus, while this, let's go here, so what we have done from our formula, let me do this, okay, let me know guys if you can see this properly। ओके सो अपने पास यहाँ पे हाँ, अपने पास यहाँ पे दो maps हैं। map S1 is used for containing this character frequency count, map of S2 is used for counting these characters frequency। okay, so अभी देखते हैं क्या गलत हुआ है, वापस से एक बार काउंटर्स को, अमेजिंग। अरे यार प्लीज ब्रो, प्लीज। ओके सो लेफ्ट एंड राइट काउंटर हमारे पास है यहाँ पे, and at this time we are at E, so E0, ठीक है। so map
टू में हमने पुश कर दिया s2 कैरेट r and map of s2 s2 कैरेट r 0 plus 1। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, एफ आर माइनस एल प्लस 1 ग्रेटर देन है। ठीक है, तब हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीमेंट कर दी, गेट, और इसको इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे आर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, so at some time we will be on this place। ठीक है, तो यहाँ पे आई आया, हमने पहले ऐड किया, इसको भी मैं थोड़ा सही कर देता हूँ यार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ई पे थे, हमने ई को 1 कर दिया। ठीक है, नाउ हम गए यहाँ पे, हमने चेक किया कि ये मैप इस मैप के इक्वल है क्या, नहीं है। वो हम वापस से गए और हमने आर को इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, तो आई क्या हो गया यहाँ पे, आई 1 हो गया। ठीक है, now we have checked that is this greater, I mean is this map of s1 is equal to map of s2, then no, it is not equal। then we have done this again because अभी भी जो विंडो साइज है वो s1 डॉट लेंथ से ग्रेटर नहीं है, इक्वल ही है। ठीक है, तो at this time what we have done, we have again uh, incremented this, so we have added this one, all right, and we have checked this, uh, is this is valid or not. This one is not valid, so at that time we have we have put this d। okay, so हाँ, हम पहले d को यहाँ पुट करते हैं, उसके बाद हम ये चेक करते हैं ना, तो अभी d पे ही है हमारा जो पॉइंटर है। तो अब क्या होगा, अब हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे क्योंकि हमारी जो साइज है इस विंडो का वो ग्रेटर है s1 डॉट लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैप ऑफ s2 पुट s2 डॉट कैरेट l विच वाज हियर, तो इसका हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ गाइस, इसकी वजह से ये हुआ कि इसका जो कैरेक्टर है वो डिक्रीमेंट हुआ, ना कि वो रिमूव हुआ। ठीक है, तो ये चक्कर पड़ रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा, वो कैरेक्टर रिसाइट तो करेगा यार उस मैप के अंदर, पर वो रिमूव नहीं हुआ, और यहाँ पे सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे लॉजिक फेल हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे इफ दैट कैरेक्टर what we can do here, compute if present का भी हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं, right। map of s2 dot put decrement this map of s1,
ओके, तो ये सिर्फ ग्रेटर नहीं होगा, इसे हमें क्या करना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि ये ई इसके अंदर है या नहीं है, contains की करके, if this doesn't contain, then we don't need to put it even in this map of S2, right? If that is, yeah, so we can do that. If this key is present, only then you will add that key. ठीक है, और नीचे while loop क्या करेगा, उस की फ्रीक्वेंसी को मैच करा देगा, ठीक है, उस विंडो की लेंथ के हिसाब से। मैं बताता हूँ कैसे। सो if map dot dot map of s1 dot contains key of s2 of r, ठीक है, सिर्फ तब उसको तुम ऐड करो। यहाँ क्या बता रहा है, कैन नॉट इन्वोक बिकॉज गेट इज नल। तो हम सेम चीज को यहाँ ऐड करेंगे, एंड map of s1 dot contains key of l। Let's check guys। a b, बट यार इसने फिर वो कर दिया ना, ट्रू तो देगा ही ये, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये की प्रेजेंट है फिर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिमूव करते जानी है वो की, जैसे ही जीरो हो तो वो उसको हम रिमूव कर दें, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ दिस। रिमूव इफ हैश मैप, रिमूव इफ करके भी आता है क्या कुछ, नहीं। मैप डॉट मैप ऑफ s2 dot get if this is smaller than 1, then remove, just remove that key। else decrement।
So in this way we are not even uh, shifting the pointer, we are even removing the key, right? So at this time E is removed and we came at I. Okay, now what we have uh, again done, that we have again checked if it is equal. No, it is not equal. Okay, we have incremented this also. So at this time we have checked not equal, we have added this one. Okay, now we will come here, we see that the window length is greater. So at this time we will again remove this I. Okay, so we come here, db, we will check that it is present or not. No, it is not present. We will iterate our pointer to here and we will check again. We will put that b not here, we will just increment its frequency, put that b, and then we will check that this window size is greater. Yes, it is greater. So at that time we will remove this t. We'll come here, we'll check for the frequency, it didn't match. Then again we came here, we have just decremented its frequency and came here, and it again got 1. And then we checked, do we have this? No, we have a present here. So at this time this should work, and expected was true, got this, and we need to see why that happened. Get our default s2 dot caret, s2 dot caret, map of s2, get our default map of s2, get caret is small. I need to check it. uh no VS Code, bro. IntelliJ. Okay, so hash map, we have this map dot remove the key, remove by the key only. ठीक है, so map dot put, map dot get this, map dot remove this, if that's the case. So first we are putting that
but map of S2 get a default +1 एक बार इसको चेक करते हैं ना हम हमारे कोड एडिटर में। ठीक है, इसको स्टैटिक बना देते हैं, स्टैटिक। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे S1 देना है तो S1 दे देते हैं इसमें। AB, ये वाला ही फेल हो रहा है ना क्योंकि AB एंड अब ये चीज़ हम क्या है इंटरव्यू में चेक नहीं कर सकते ब्रो, तो उसमें तो तुम लोग को प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को प्रिंट करा देते हैं हम। ठीक है, और दोनों को हम प्रिंट इस तरह से कराएंगे, मैप ऑफ S1 डॉट गेट, वो कर देते हैं ना, मैप कर देते हैं मैप ऑफ S1 डॉट फोर ईच। सो ये इस तरह से होगा, और इसका पहला था कैरेक्टर, अच्छा CH करके कर देते हैं, और सेकंड था हमारा वैल्यू, सो की एंड वैल्यू कर लेते हैं, की और वैल्यू। और यहाँ पे एस आउट हम कर देंगे की कॉमा की प्लस कॉमा प्लस वैल्यू। ठीक है, बी कैपिटल था, और एस आउट S1 के लिए, एंड S2 के लिए। और इसके लिए न्यू लाइन, तो न्यू लाइन हम इस तरह से लाते हैं। ठीक है, दैट्स डन, लेट्स रन दिस।
Okay, so first S1 we got S1 ठीक आ रहा है, S2 हमें मिला E, फिर हमें मिला A B S1, फिर S2 मिला E I, फिर S2 मिला D1 E0 और I, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिमूव नहीं किया, ठीक है। और ये रिमूव कैसे नहीं हुआ, क्योंकि इसकी लेंथ ग्रेटर आई नहीं, या फिर ऐसा कुछ। क्योंकि यहाँ जब पुट एक बार हो जाता है तो इसकी लेंथ ग्रेटर आनी चाहिए, ठीक है, और इस टाइम ही ये रिमूव हो जाना चाहिए। यहाँ डी, नाउ यहाँ ए। अब देखो इस पॉइंट पे हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, पर ये रिमूव ही नहीं हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहे हैं। कैन वी रन इट अगेन? स्टिल रिमूव नहीं हो रहा है। रीअसाइंड लोकल वेरिएबल। हम्म। सो ये वाला कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से हम स्टिल अनइक्वल मैप जनरेट कर रहे हैं।
if map of s2 dot get s2 char at l and it is smaller than 1, then remove it। यार हम सीधा रिमूव भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम रिमूव कर देंगे ना तो क्या होगा कि ये वाली कंडीशन उसको फिर से ऐड कर देगी। ठीक है, तो बी वापस से ऐड हो जाएगा। लेट्स डू इट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैप ऑफ एस टू को रिमूव कर देंगे। इसको मैं एक बार के लिए ये कर देता हूँ। देन लेट्स, यस, इट डिड वर्कड आउट। कैन आई कीप इट हियर? सबमिट करते हैं, कोई ना कोई केस तो रहेगा भाई, कोई ना कोई केस तो रहेगा। देखते हैं क्या है। इसको मैं यहीं ऐड कर देता हूँ यार। तो अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी सी डी ए फॉल्स करना चाहिए था पर ट्रू किया है। और ऐसा क्यों है? ए बी ए डी सी सी डी ए फॉल्स, डी सी डी ए। पता है, हमें यहाँ चेक करना चाहिए उसको, क्योंकि डिक्रीमेंट करने के बाद भी तो आंसर आ सकता है ना। और ये यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा। 74 टेस्ट केस, अब 74 पास हो गए हैं और 82 आ गया। नाइस वन। पर हम आए तो वापस वहीं पे ही है। ए डी सी डी सी डी ए। ए डी सी के टाइम पे क्या हो रहा है, हमने ए को इंक्रीमेंट किया, लेंथ चेक की, मैप चेक किया, इंक्रीमेंट करा, सी ऐड किया। ठीक है, फिर डी ऐड करा, फिर ए ऐड करा। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें बस इतना सा ही इशू हो रहा है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, 84 केसेस पास हुए हैं।
A D C D C D A. We need to have this. Let's say ADC DCDA। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं यार इसको। हमारे एल्गोरिदम को भी देख लेते हैं एक बार। इसको तो हटाओ। एक मैप तो बन ही गया है, हम इसके पॉइंटर्स भी बना देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डी को ऐड किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाइल लूप लग रहा है, फिर डी ऐड हो रहा है 1। ठीक है, फिर चेक कर रहे हैं और फिर प्लस कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर पहले लेंथ चेक हो रही है, फिर क्या कर रहे हैं, फिर फिर हम सी को भी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर चेक कर रहे हैं, फिर प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ अब भी हम चेक कर रहे हैं कि ये ग्रेटर है क्या S1 से, तो नहीं, ये ग्रेटर नहीं है, ये इक्वल है। तो इस टाइम भी हम ये डे पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको इंक्रीमेंट। भैया ये हो गया 2, और ये रिमूव होगा तो पूरा रिमूव होगा। ये इशू आ रहा है यहाँ पे, तो जो हमने केस सोचा था ना, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से। तो ये वाला, तो जो ये वाला सॉल्यूशन था ना, वो तो सही था। पर ये वाला जो है ना हमारे पास, if map of s2 dot get is smaller than or equal to 0, इसको जो अब रिमूव करना है, ये रिमूव नहीं हो रहा है। ठीक है, we need to check this one, बट अब यार ये जीपीटी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी इसकी इंटरनल वर्किंग वाला काम है ना। ये वह पूछते हैं कि सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेता हूँ। एक ये, और एक ये।
Why is this always giving me false? एक और ऐड कर देते हैं, ये वाला. Good question. I have this. If character does not exist in map 2, then as of 2 get returns null, not 0. Comparing null to 0 will not throw null, not false. So if you're get और default कर लो भाई. ये है मेरा. अब बता. Implementation sliding window. The bug is you're checking before decrementing. So map of s2 dot get is always at least this. अच्छा. और if this happens then remove. वाओ यार. ये लो. अरे सबमिट. नहीं यार. It's taking too much time. Although we have solved. Oh bro. We have solved almost 99 test cases. So बस 10 टेस्ट केस रह रहे थे. यार इसको भी सॉल्व किया जा सकता है ब्रो. Just a second guys, I'm just coming back. All right, let's look for the solution. We all we only had 10
test cases left. Otherwise, we have almost solved 99 test cases. But if it's not solved, then it's not worth. So let's see what's the recommended is bigger of one. इसने तो सॉर्ट कर दिया यहाँ पे इसने क्या किया, कैरेक्टर काउंट ले लिया, space complex, since we have at most 26 characters, हैश टेबल से किया है, स्लाइडिंग विंडो से दोनों का काउंट ले लिया, आई मीन दो काउंट बना लिए, मैचेस, अच्छा लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर, if matches equals to 26 then return true, otherwise do what, if this plus 1 equals to this, then match decrement index r, l plus plus. उस कैरेक्टर की इंडेक्स ले ली और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दिया, बस इतना सा काम किया है इसने, ठीक है। और बार बार चेक करता जा रहा है कि मैच कर रहा है क्या, अगर मैच नहीं कर रहा तो पहले राइट पॉइंटर की इंडेक्स लिया है, उसको इंक्रीमेंट करते जा रहा है, जितने भी उसको इंडेक्स मिलते जा रही है, और फिर क्या कर रहा है, मैचेस भी इंक्रीमेंट करते जा रहा है। अगर क्या हो रहा है, एस काउंट ऑफ इंडेक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर ज़्यादा मिल रही है ना इसको, मतलब मैचेस ज़्यादा मिल रहा है, और तो ये मैचेस को इंक्रीम और डिक्रीमेंट कर रहा है, इंडेक्स इज दिस, नाइस वन ब्रो, नाइस वन।
Hey everyone, welcome back, and let's write some more NeetCode today. So today let's solve the problem permutation in a string. And there's actually two solutions to this problem. One is the 26 times n solution, and there's another solution that's actually just big O of n. Now we know that a constant number here doesn't actually affect the overall time complexity, but that being said, I'm still going to focus on the slightly more optimal solution. Because it's a little bit more difficult, but it's also interesting, and it's a pattern that's actually used in other LeetCode problems as well. So we're given two strings, S1 and S2, and all we want to do is return true if the string S2 contains a permutation of S1, and we return false if that's not the case. Now, you can get bogged down and really confused with the explanation of this problem, like focusing a ton on permutations, but I'm going to try to simplify this for you immediately without going down too many rabbit holes. And let's actually take a look at this first example. So we see that S1 is the target string. That's what we're trying to look for. We're looking for a permutation of this string somewhere inside of S2. Can we find it? Now, what does permutation mean? Well, we could actually, create a permutation of the string, which would be really complex and annoying. But we see that over here, there actually is a substring of S2, and it's a permutation that matches S1. It's BA, right? The exact same characters, just in a different order, which is perfectly fine. Now, by the way, AB itself technically counts as a permutation of itself. So this string is also allowed. But since you kind of see, what we're really just looking for is there a substring of the exact same size? So this is 2 characters, so we have to look for a substring of 2 characters here, right? We can't just take 3 characters and say that that's the permutation. But, we're looking for a window same size as this, and it has to contain the exact same characters as S1, just maybe in a different order. Now, does that kind of sound familiar to you? Well, it's the same thing as looking for an anagram, right? We're just looking for the exact same characters. We don't care about what order they're in, right? So it's looking for an anagram, so we can actually use a typical sliding window technique. We're going to look at every window in S2 that's the exact same size as S1. So in this case, length 2. So we're going to look at the first 2 characters, then the next 2 characters, then the next 2, etc., until we find an exact match with S1. Now, if we were actually comparing the exact characters, that would be pretty annoying. The time complexity in that case would, let's say, be n times m, where n is the size of S2, m is the size of S1, because we're looking at every single window. But we can do it a little bit better. We can reduce it to be 26 times n if we use a hash map, because actually in this problem, it's written all the way at the bottom of the description, so it's not on screen, but they tell us that all the characters in both of the strings are going to be limited to lowercase a through lowercase z, so therefore the size of our hash map is going to be at most size 26. There's only 26 characters. So as we build that hash map, we're actually going to have 2 hash maps. We're going to have one hash map for S1, which is going to stay the exact same. We're also going to have a second hash map for S2, which is going to have the characters of the current window that we're at. So every time we create a window, right, each time we shift our window to the right, we're only just adding one character and maybe removing the character that was on the left. And then once we have those 2 hash maps, we're going to compare them if they are equal, which is a 26 operation, right? There's only 26 characters. And so that's where we get this time complexity from. But there actually is a better way. This solution is doable. It's easy to code up, and you can do so if you would like. But I'm going to show you the slightly more optimal solution, which is actually not even going to have this 26. It's just going to be big O of n. So let's look at the big O of n solution. And it's actually similar to the previous solution we discussed. We're actually going to still have 2 hash maps, one for S1. So as you can see, we counted the occurrences of each character. We call it S1 count. So we have 1A, we have 1B, and 1C. So we've filled our hash map with the same values. And our S2 hash map is empty because first we're going to set our window here, and then we're going to continue to shift it by 1 each time.
but the difference here is we're not actually going to be comparing the two hash maps together. We won't need to because we're going to keep track of one more variable. We're going to call it matches. We're basically going to have a little shortcut. Initially, this is going to be set to 0. I'll just create a box for it, even though it's just going to be a single value, but we might be updating it to other values. But this matches variable is basically going to be a shortcut that's going to allow us to not have to compare the entire hash maps each time, which we know in the worst case could be a 26 operation, having to look through every single character of the hash maps. Because this matches variable is actually going to maintain the total number of equal characters in each of these hash maps. And actually, even though I didn't draw the entire map for S1 and S2 in this case, because actually we know that there's A through Z, there's 26 characters, and I didn't actually draw out the entire thing, but we are going to fill in the values in the code because we know that the rest of the characters in S1 are going to be of count 0, right? And matches is going to tell us the exact number of matches of each character between the two hash maps. So we want to know, does the A count of S1 and of S2 match? If it does match, then that's a +1. If it doesn't match, then that's not a +1, right? And we want to know the number of matches for every single character, and we want to know that initially, right? It could be 26 matches or it could be 0 matches, right? It could be any value in between. But once we have 26 matches, that means that for some window in S2, and by looking at it, we know that this is going to be the window. We know that this window has 26 matches with this window because they both have a single A character, a single B character, a single C character, and for the other remaining 23 characters, they both have 0 of those characters, so therefore they have 26 matches. That's what we care about, and we can do that with a single variable without having to look through the entire hash map. Let me show you the algorithm to do that. It's pretty straightforward, actually. So first thing we're going to do is actually just look at the first 3 characters of S2 and then fill up our hash map. So we have a single B, we have a single A, and we have a single X. Now you can see that this is what our hash maps actually look like. We have looked at the first 3 characters, and now what we're actually going to do, for the only time, we are actually going to iterate through both of these hash maps comparing each character. We actually do have to do that at least one time, but it's a single 26 operation. So, and then after that, we'll only have to just iterate through this string. So the overall time complexity is going to be n plus 26, which we know is going to be equal to big O of n. It's definitely better than if we were just doing 26 times n. Okay, so we're going to look at every character. A, they both have one A, they both have one B. S1 has a single C, but S2 does not have any Cs, so therefore they have 2 matches, A and B, but C is not a match. Then we're going to look at all the other characters after C, and we're actually going to see that yes, there is a match, right? Because they both have 0 Ds, they both have 0 Es, they have 0 दो काउंटर ले लिए for length of S1 matches, फिर जब तक ये हैं ऑलरेडी मैच कर रहे हैं तब तक का, फिर लेफ्ट और राइट काउंटर लिया है. if matches equals to 26 then रिटर्न कर दो, अदरवाइज आर पॉइंटर का इंडेक्स निकाल के और फिर काउंट इंक्रीमेंट कर दिया. फिर चेक करा कि S1 के इंडेक्स का काउंट S2 के इंडेक्स के काउंट से इक्वल है या नहीं है. इक्वल है तो मैच इंक्रीज कर दिए, अदरवाइज मैच डिक्रीज कर दो. else if this is the case, otherwise लेफ्ट पॉइंटर का इंडेक्स लिया, डिक्रीमेंट कर दिया क्योंकि हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर चेक कर लिया कि इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज अगर लेसर है, लेस कैसे, S1 of count index minus this,
देन मैचेस भी डिक्रीमेंट होते जाएंगे और हम एल पॉइंटर को रिटर्न करते जाएंगे और फिर हम मैचेस रिटर्न कर देंगे। ठीक है यार, मैंने तो हैश टेबल का यूज़ लिया। हाँ, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या होगा, int of 26 int of array s1 count plus new int of 26 s2 count 6. Now for int of I equals to 0, I is smaller than ये s1 तक के लिए किया था। character at I matches to 0. Okay, s1 count of I equals to s2 count of I, then matches increases. Now int of L is to 0 and for int of R equals to 0 as well. R is smaller than uh, R is smaller than s2 dot length.
equal to 26, then return true. Now int index equals to s2 dot caret r minus a. S2 of count index plus plus because we are incrementing it. Okay, now f s1 of count at that index is equal to s2 of count this index, then matches plus plus, else if s1 at this time matches decrements. Now we will do it for L, and we will decrease this, then we'll check the index for this, and we will increase L. Okay, and in the end we're gonna be returning matches equals to 26. Int index already defined. Yes, index out of bound. s1 डॉट लेंथ तक जाएगा.
अच्छा आर एस वन डॉट लेंथ तक रहेगा। बट इससे क्या होगा यार? ये तो लगाया ही नहीं ना। अमेजिंग। बट स्टिल यार, ये मैचेस वाला तो समझना पड़ेगा सही से। कोई नहीं, इसको कल समझते हैं। इसके बाद दो हार्ड मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम, देन स्टैक बाइनरी सर्च और फिर लिंक लिस्ट आएगा। Alright guys,